He's an employee of some officer of Municipal Corporation Bhopal, my lord. On 14/12/2021, in the evening, my lord, in the dark, he visited our property, my lord, with machines and all, and dismantled all the fencing, my lord, which we had done upon our land, my lord. My case is very short, my lord. He's an employee. There is no law. Some officer of he has Municipal no Corporation authority Bhopal, my lord, to visit on my, and 14/12, why they are doing it, my lord, 2021, they have dug in the holes evening, over my my lord, land, in the dark. and they are dumping He visited our property, my all the lord, with kachra machines and all, and in those holes and burning dismantled it, all my lord. the. So complaints were also made by the residents, my lord. And Now our before this honorable court, they have filed a reply saying कि हमको तो यूज करने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा, इन एंटर अपने लैंड को यूज करने के लिए नहीं समझ में आया आपकी बात। कहाँ है वो ऑर्डर, कहाँ है जिससे कि ऑर्डर है नहीं सर। अच्छा आपका देयर इज नो ऑर्डर माय लॉर्ड, देयर इज नो नोटिस, देयर इज नो ऑर्डर। एग्रीमेंट क्या पढ़िएगा जरा, पढ़ेंगे लीज के एग्रीमेंट क्या है, क्या आपने नहीं, ये लीज तो प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट लैंड है ऑन एयर्स ऑफ नवाब की, उन्होंने हमारे फेवर में खरीदी थी ये लीज। उससे ये जो इनका निशान का जो मकान है, तो फिर क्यों लगाया आपने ये कागज यहाँ पर? नहीं, ये लैंड हम एक सेकंड, ये जो मकान जो है जिससे प्रॉपर्टी ये हटाया गया है, ये किस लैंड से हटाया गया है? मकान नहीं हटाया सर। अरे जो जो भी आपका बाउंड्री हटा दी गई है, ये लैंड वी हैव गॉट दिस लैंड बाय लीज my lord. Now we have that land is situated at which place? at Lord Thanugaon, खसरा नंबर 14। हाँ बताइए, where is the allotment in your favor? सर द ऑनर्स के लिए जो खसरा एंट्रीज हैं वो है, उन्होंने दी हमको ये अनेक्सर में लॉट में, काइंडली सी पेज P2। जी ठीक है, फिर कितनी 44 लैंड दी गई है आपके पक्ष में? 1.88 एकर्स में लॉट। जी ठीक। और ये एडमिटेड फैक्ट है क्योंकि इनकी SDM had also called for the report because it violates environmental laws also, my lord, and report was submitted that the Nagar Nigam Bhopal is illegally, my lord, just to save the money of diesel and petrol, my lord, they are dumping all the अच्छा पढ़े ना इसको। जी। एंड जवाब P6 पढ़िएगा, P6 में लॉट पढ़िएगा। हाँ P6। या क्या आपने सवाल उठवाया तो था RTI में? हाँ राजेंद्र सिंह राजपूत कोई पत्रकार हैं, उनसे? जी हाँ जी। तो इन्होंने कहा हमने फेंसिंग हटा दी। हाँ तो क्या क्या तो गलत? फेंसिंग हटाने का इनको अधिकार ही नहीं। ये क्या करें, आप पढ़िए तो आगे, आप कानून लेकर आइए। जी हाँ। फेंसिंग तालाब के FTL लेवल हाँ। से 50 मीटर अंदर नगर निगम की बिना अनुमति अवैध रूप से लगाई गई देयर इज नो परमिशन। NGT सेंट्रल जोन भोपाल द्वारा पूर्व में दिए गए आदेशों के अनुपालन में लगाई गई फेंसिंग को हटाया गया है। जी अब बताइए। नहीं, इसमें कोई ऐसा कहीं कहीं आदेश ही नहीं सर। इवन भोपाल मास्टर प्लान में इट इज परमिटेड मिलोड इसे बाव वाइड फेंसिंग मिलोड। प्लीज शो मी दैट भोपाल मास्टर प्लान। हाँ मिलोड में काइंडली सी पेज 44 रेलेवेंट यस एक्सट्रैक्ट कॉपी है ये सर P7। जी ऊपर पढ़िएगा, आप पढ़िएगा 44 पेज पे आप पढ़िएगा। हाँ बड़े तालाब के क्षेत्र खुला रखा अन्य तालाब समय ये प्रावधान कहते हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप? उसको ढंग से पढ़िए ना, धीरे धीरे। बड़े तालाब के किनारे से न्यूनतम 50 मीटर दूरी तक का क्षेत्र खुला रखा जाएगा। हाँ फिर अन्य तालाबों के संदर्भ में यह प्रावधान किया जाता है कि तालाबों के किनारे से 33 मीटर का क्षेत्र रखा जाएगा। हाँ, तो 50 इस श्रेणी में जो तालाब सम्मिलित है वो निम्नानुसार है। जी ये फिर तालाब दिए सर। देन मिलोड में बड़े तालाब के लिए है ना 50 मीटर तक खुला रखा जाएगा। हाँ तो खुला ही है सर। फेंसिंग जो खंबे गाड़ के फेंसिंग लगाना इज नॉट ए कंस्ट्रक्शन और ए बिल्डिंग में लॉट। अच्छा अंडर द माय मोस्ट सबमिशन इज दैट अंडर द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट वी नीड परमिशन ओनली टू इरेक्ट और कंस्ट्रक्ट समथिंग में लॉट। अच्छा फेंसिंग तो कहीं है ही नहीं उसमें। एंड just to prevent the municipal corporation from destroying the nature of my land, my lord, and to dump all the sewage and all the over my land, my lord, dug holes, I had erected that fencing, my lord. अच्छा फिर हमको नोटिस दे देते या ऑर्डर देते तो हम एक्सप्लेन करते। रातों रात आके एकदम से सब तोड़ के सब ले गए सर। वो NGT का ऑर्डर कहाँ है? NGT का ऑर्डर हमारे पास नहीं है सर। ये लगाए इन्होंने जब कहा, जब आपको सूचना के अधिकार में जानकारी दे दी 11/1/22 को, उसके बाद आपने लिया नहीं कि NGT का ऑर्डर? नहीं सर। NGT इतनी मेहनत तो करते वकील साहब।
एनजीटी सर, इसमें एनजीटी का खुला रखा जाएगा अरे भाई इसमें मिलोड में जब काइंडली हवाला दे रहे हैं ये माननीय एनजीटी सेंट्रल जोन भोपाल द्वारा पूर्व में दिए गए। my humble submission is that I haven't constructed anything, my lord. ठीक है, I have kept where it is your open. reply? Your Lordship, our reply is that, Lordship, in our reply, we have submitted जी that steps were taken, my lords. One activist complained about certain waste being dumped जी near the lake, Your Lordship. जी In pursuant to which, my lords, sir, a committee was constituted, and in that committee, a spot inspection was done, Your Lordship. Where is the report of the spot inspection? Yes, sir. My lord, may I humbly intervene for a moment? Just नहीं let him complete My first. lord. Lordship, page 9 of our reply, Your Lordship. R1, annexure R1. R1 क्या है उसमें रिपोर्ट कहाँ है? Your Lordship, it's a स्पॉट letter. इंस्पेक्शन की रिपोर्ट कहाँ है? So Where is the the report report is of- not there, my lords. हाँ, so how can you file incomplete document? However, Your Lordship, that However नहीं, you file complete set of documents yes, including the copy of the spot inspection and the panchnama which was prepared by you while carrying out a spot inspection. देखिएगा, My lord, respondents have not filed complete set of documents. Though Shri Machani submits that a spot inspection was carried out in terms of the complaint lodged by one environmental activist, Dr. Subhash Chandra Pandey, and on the basis of that spot panchnama, action was taken, comma, but the report of that panchnama is not available on record, full stop. Let same be brought on record. Secondly, respondent municipal corporation will also file specific affidavit to the pleadings raised by Shri Rajesh Pancholi that erection of barbed wire does not require any permission from the municipal corporation, and therefore that barbed wire could not have been removed in terms of the directions of the NGT Central Zone Bhopal, full stop. Respondents will also file copy of the orders of the NGT Central Zone as have been referred in their order annexure P6 dated 11/1/2022 and information which was furnished to one Shri Rajendra Singh Rajput under RTI, full stop. Let this needful be done within 2 weeks, list thereafter. My lord, may I add only one word? हाँ. There, my lord, complaint was made to the SDM and a spot inspection was done, my lord. That I have annexed, annexure P19, my lord. तो उसमें पाया कि नगर निगम ने खड्डे किए हैं, उसमें पूरा आग लगाते हैं तो पूरा देखेंगे उनको जी हाँ, फाइल करने वो लगी हुई है सर। ये करने दीजिए उनको। आई एम ओब्लाइज्ड सर। लॉर्ड इंटरिम प्रोटेक्शन इंटरिम क्या है? स्टेटस को ऑर्डर नहीं कोई जरूरत नहीं, वो तो टूट चुकी, ऑर्डर मिल चुका था सर। गलत ऑर्डर है वो। हेलो Please, Your Lordship. You are listed for Milord vacating stay. The pleadings are complete. जी सही। क्या मैटर है ये? Milord, what happened, Milord? Some of the Milord daily wages, Milord, they were Milord recognized. जी Several petitions came before this honorable court, जी। Milord. Earlier, Milord, those petitions were decided, Milord. नहीं, सर्विस मैटर का तो मेरे को जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। नहीं, इसमें एक्चुअली एफआईआर को लॉन्च करने का ऑर्डर की है, उसके कारण आपके पास। अच्छा, हाँ, बिकॉज सर्विस मैटर जुरिस्डिक्शन इज विद अनदर बेंच। एफआईआर की क्वेश्चन के लिए आए हैं आप? एफआईआर हुई नहीं है। हाँ। डायरेक्शन टू लॉन्च एफआईआर। क्या है वो, कहाँ पर है वो ऑर्डर? P10 Milord, page 72। जी जी विषयांतर्गत लेख है कि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में शिबी के श्रीवास्तव प्रभारी प्रमुख अभियंता के पद पर पदस्थापना की अवधि में बालाघाट में कार्यरत समयपाल खलासियों को नियमित वेतनमान की पात्रता न होने पर भी षड्यंत्र पूर्वक जानबूझकर तथ्यों को छुपाते हुए निरम विरुद्ध आदेश क्रमांक 100 जारी किए जाने की कार्रवाई की गई।
प्रकरण में प्रमुख सचिव द्वारा न तो अनुमोदन दिया गया और न ही नियमित वेतनमान के भुगतान की स्वीकृति का अनुमोदन दिया गया है, परंतु प्रकरण में श्री वी के श्रीवास्तव द्वारा जारी किए गए आदेश में प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदित का उल्लेख षड्यंत्र पूर्वक आपराधिक तरीके से नियम विरुद्ध कर आदेश जारी किया गया है, जो पदी दायित्व का निर्वहन में आपराधिक कृत्य है की श्रेणी में आता है। अतः उपरोक्त के संबंध में श्री के श्रीवास्तव सेवानिवृत्त अधीक्षण यंत्री एवं तत्कालीन प्रभारी प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के विरुद्ध उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का कष्ट करें। जी, अब ये बताइए कि कहाँ है वो ऑर्डर जिसमें आपने प्रमुख सचिव की अनुमति का उल्लेख किया है? Before going to that, my lord, some of the facts are very important in this case. एक सेकंड, लेट अस कम टू दैट, फिर आपके फैक्ट भी सुनेंगे। उल्टा जाने में गड़बड़ होगा, सीधा जाए तो ठीक रहेगा वो। लेकिन वो मैं जब तक आगे बढ़ूंगा आपको समझ में आ जाएगा कि उसकी जरूरत थी नहीं थी, क्या था और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जी जी, लेकिन नहीं, what I have done, my lord, is this. Kindly come to, my lord, page 48. जी जी, That there is an order, my lord, passed in WP number 668 of 2021. जी By the instant petition, the petitioner are raising the grievance that despite having eligibility, they have not been granted the regular pay scale from the date of their initial appointment. The learned counsel for the petitioner submits that in this regard, petitioners have also made a detailed representation. Now, kindly, and my lord, important is the next paragraph. Shri Hazari, learned counsel for the state submits that instead of deciding the said representation, which has not been addressed to the appropriate authority, petitioners be directed to file a fresh representation before the competent authority. Kindly underline this, my lord. जी जी, Competent authority, that is engineer in chief. that's why I asked you. I'm aware of this fact that it is not even the engineering chief, it is the chief engineer who is the competent authority to give appointments to class 3 and class 4 employees. Therefore, I asked you a specific question that whether you have mentioned this fact as per the directions of the secretary or not. That is the only crux of the matter. If you have mentioned it, if you have taken a decision in your own capacity, then things will be different. If you have mentioned about those directions, then things will be different. So please come to that order to demonstrate as to Let whether us it go- is let mentioned us go प्रमुख without the सचिव से date. अनुमति का उल्लेख है कि नहीं है, बस इतना बता दीजिए। उतने में बात नहीं खत्म होगी, इसलिए मैं- नहीं, आप बात को जितना लंबा बढ़ाना चाहें बढ़ाइएगा, मुझे उतना बता दीजिए, उसके बाद आई विल बी दो चीज सेटिस्फाइड। होती है जी एक कि क्या कोई एक्सप्रेस कोई अनुमोदन है कि नहीं, जी, दूसरी चीज अनुमोदन की जरूरत थी कि नहीं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस केस में, क्योंकि यहाँ कंप्लायंस हो रहा है हाईकोर्ट के डायरेक्शन का। अरे वो सब बात की बात है। नहीं वो बात पहली है। सिर्फ इतना बता दीजिए, उन्होंने उसमें अनुमोदन का लिखा है कि नहीं लिखा है? उन्होंने पहले लिखा कि भाई इसमें जो है हाईकोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से इनको डिसाइड करना है करके। जी, कहाँ है वो ऑर्डर? मैं इसीलिए थोड़ा सा आपको क्रोनोलॉजिकली बता दूं, ठीक है, वो चलिए, आपको थोड़ा सा आसानी होगी। ठीक है, चलिए। तो स्टेट सेज बिफोर द हाई कोर्ट that the competent authority is engineer in chief respond number 3, so that appropriate decision shall be taken by the authority. जी Now kindly see, my lord, what is to whom this direction is? High court's direction. In view of the aforesaid, the petition is disposed of with a direction to the petitioners to make a fresh representation to respondent number 3 within a period of 15 days from today, and if the same is done, the competent authority, that is respondent number 3. This is what the High Court says, that the competent authority, who is the respondent number 3, shall consider the same and pass appropriate orders thereon within a further period of 4 months from the date of the submitting the representation. जी, It is also directed that while considering the representation, the authority shall consider the order passed in WA number so and so decided on 23/11/2019. जी, Why I was, my lord, insisting, my lord, to read this, my lord. This is, my lord, order of the High Court which says, my lord, that the competent authority is number 3
and direction is, my lord, to decide, my lord, by the respond number 3. जी Now thereafter, my lord, what happens? Kindly see, my lord, we have given, my lord, a chronology जी of the dates, page 14, and which is not denied, my lord. पेज 14 Page 14, we have given the whole, my lord, how the matter has proceeded. पेज 14 पे जी Page 14 में bottoms देखेंगे. जी 5/1/2021, जी office superintendent prepared the note sheet and marked it to the executive engineer with regard to take decision A. Decision is, my lord, with regard to this. Then 5/1/21, executive engineer accorded, actually it should be, my lord, approved the same on the basis of equal pay for equal work. जी 6/1/21, superintending engineer also accorded the same as indicated in A. 12/1/21, it was put forth before the engineer in chief petitioner who was accorded A, and matter was placed and forwarded to the principal secretary. जी 12/1/21, principal secretary marked the same to the additional chief secretary. जी 13/1/21, additional chief secretary forwarded the same with its approval to financial advisor for its confirmation, that is note A. जी 13/1/21, financial advisor marked the same to the accounts officer. 13/1/21, accounts officer marked and forwarded the same to the principal secretary. 15/1/21, the principal secretary directed that the engineer in chief is the competent authority, and therefore, as in accordance with the order, he has to take the decision accordingly. I will show, my lord, that is there in the note sheet. जी Then 9/2/21, financial advisor record. 15/3/21, कहाँ है ये नोट शीट note sheet your lordship will find page 60 onwards. जी तो फाइनल हियरिंग में सुनेंगे इसमें आज क्या जल्दी है रीडिंग्स आर कंप्लीट जवाब आ गया आपका इसमें Yes, sir. रीडिंग्स आर कंप्लीट लिस्ट फॉर फाइनल हियरिंग in part B of the cause list as per its turn and seniority. IR to continue. IR if any to continue. List in the week commencing 21 August for final disposal, top of the list. How blessed. In part B of the cause list. Year number 25, 2000. Petitioner was a selected Sarpanch, my lord, by the annexure P2, my lord. He was subjected to show cause notice under section 40 of Panchayat Raj एवं ग्राम स्वराज अधिनियम. तो लिखिए petition is admitted for final hearing 24 नंबर में क्या जी क्या हुआ Petitioner is a Sarpanch, my lord, elected Sarpanch by annexure P2 on 26/11/2021, lordship. She was subjected to the show cause notice under section 40 of Panchayat Raj and Gram Swaraj Adhiniyam, जी which was duly been replied by the petitioner by annexure P1, lordship. जी Thereafter, another show cause notice was served to her lordship on 15/12/2021. एक सेकंड जी फिर क्या हुआ But thereafter, my lord, surprisingly, on 1/2/2022, one day before passing of the order, she has been subjected to notice under section 92 of the Adhiniyam, lordship. कहाँ है वो नोटिस That is at, my lord, page number, my lord, it is at page number, my lord, 18. 1/2/2022 dated, lordship. Page number 18. जी उपरोक्त विषय अंतर्गत अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत होशंगाबाद के द्वारा प्रस्तुत की गई जांच प्रतिवेदन में बिंदु क्रमांक 5 एवं 6 में मनरेगा अंतर्गत फर्जी मजदूरी मटेरियल राशि 179740 एवं जन सुनवाई क्रमांक 4719 में अनियमितता की राशि 2,86,000। कितने दिन का नोटिस देंगे भाई आप No, एक मिनट क्या एक दो को आप नोटिस देंगे कि दो दो को उपस्थित हो जाए 2 को ऑर्डर भी पास कर दिया। हाँ दो को ऑर्डर भी पास कर दी ये One नोटिस कब सर्व हुआ था नोटिस हॉलो फॉर्मेलिटी The replies not क्या है? there.
Kindly, Mr. Lordship, page number 7, Annex R1. These are the show cause notice which was issued on 1/2/2021. Thereafter, 1 another 2 21 कहाँ है annexure R1. Yes, Lordship. Thereafter, next page, another notice dated 15/12/2021. नहीं, तब तक तो आपने जो है डिटरमिन नहीं किया था क्वांटम ऑफ रिकवरी। आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि क्वांटम ऑफ रिकवरी जो है वो आपने डिटरमिन की 1/2/2022 को, उसके पहले अमाउंट डिटरमिन हो गया था क्या? फिर इस नोटिस की क्या जरूरत थी जब आप पहले नोटिस दे चुके थे? आप 1/2/2022 को नोटिस देते हैं, 2/2/2022 को आदेश कर देते हैं। क्या इसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की कंप्लायंस माना जा सकता है? आप रिटर्न के साथ या पिटीशन से कोई ऐसा दस्तावेज बताइए कि आपने ये अमाउंट क्वांटिफाई करके पहले इनको नोटिस दे दिया था। जांच प्रतिवेदन है सर। आपसे क्या सवाल क्या पूछ रहे हैं? आपने यह अमाउंट की जांच प्रतिवेदन से तो रिकवरी नहीं हो जाती, जांच प्रतिवेदन के ऊपर निर्णय लिया जाता है। आपने निर्णय लेकर ये डिसाइड कर लिया था कि इतना इतना अमाउंट रिकवर करना है, इसलिए इनको शो कॉज नोटिस दिया जाना है। ये शो कॉज नोटिस है ना, सूचना पत्र 1/2 का। कब तामील हुई इसकी? लिखिएगा, श्री ऐश्वर्य साहू, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर। This petition is filed being aggrieved of order dated 2/2/2022 passed by the additional collector within bracket development and chief executive officer Jila Panchayat Narmadapuram, inflicting penalty of recovery of rupees 2,32,870 from the petitioner. From the petitioner. Full stop. It is submitted that petitioner, who is working as Sarpanch of Gram Panchayat Sona Savri, Tehsil and District Narmadapuram, has been visited with this penalty without affording her any opportunity of show cause. Full stop. A hollow formality was made by the additional collector by issuing us notice on 1/2/2022. Sir, हुआ था आपको ये? That has been sir. On उसी दिन हाँ, and without affording any reasonable time to present her side of the story, orders have been passed on 2/2/2022. It cannot be said that the order has been passed in compliance of the principles of natural justice. The time period which was given by the additional collector reflects his undue haste to pass the impugned order and cannot be said to have been passed after due application of mind. Full stop. Shri Lokesh Jain, learned government advocate, in his turn, reading from the return, submits that show cause notices were issued to the respondent petitioner on 1/2/2021. Full stop. Thereafter, on 15/12/21, another show cause notice was issued, and then an inquiry report was as contained in annexure R2 was received. R2 date क्या है इसकी? R2 की date? R2 was received. क्या date है इसकी? Date क्या है इसकी? डेट नहीं नोट। R2, which Shri Lokesh Jain, learned penal lawyer, admits is undated, was received. When copy of this Janch Prativedan was supplied to the petitioner? Full stop. इस जांच प्रतिवेदन की प्रति कब दी है आपने पिटिशनर को?
when was copy of this Janch Prativedhan given to the petitioner? No, Lordship, it is also Stop not Shri mentioned. Lokesh Jain is not in a position to demonstrate from record that copy of this inquiry report as contained in annexure R2, which is admittedly undated but signed by Block Panchayat Officer Janpat Panchayat Hoshangabad, was ever given to the petitioner. Therefore, it is evident that there is violation of the principles of natural justice. Without supplying copy of the inquiry report in favor of the petitioner and giving her an opportunity to show cause against the said inquiry report, no action could have been taken by the additional collector, development and chief executive officer Jila Panchayat Hoshangabad in the manner in which it has been taken. Just giving a day's time cannot be said to be a substantive compliance of the principles of natural justice. Full stop. Therefore, the orders of the additional collector within bracket development bracket close and the chief executive officer Jila Panchayat Hoshangabad is hereby quashed. He is directed to supply copy of the inquiry report along with the material which was collected by the inquiry officer in favor of the petitioner, giving at least 15 days clear time to furnish reply and thereafter take action in accordance with law. In above terms, petition is disposed of. Number 26. उसमें एक चीज और जोड़िएगा that the order of the additional collector is arbitrary and suffers from lack of non-compliance of the procedural requirements. This is a case. This petitioner submitted an application under Right to Information Act, जी, and he had sought the information. 7 issues were raised in that application. Now that application was rejected, and the information was, please see, my application is annexure P1. 7 issues at page 11. जी, On this, these 7 issues were there that the information was required. जी, Now, page 11. page 11, yes. G. The PIO, that Public Information Officer, passed an order, annexure P2, page 12. एक मिनट रुकिएगा आप ये. G. जी. Page Now, 11. जी, पेज 11 सर मेरी एप्लीकेशन है. जी, ये 7 इश्यूज पर मैंने इंफॉर्मेशन मांगी थी. जी, इस पे सर इन्होंने अनेक्शर P2 से जी, he said that उसने इन्होंने विषयांतर आपके आवेदन में चाहिए गई वांछित जानकारी संबंधित जांच शाखा कराई गई 1357 द्वारा चाहिए जानकारी श्रीमती स्वयंसो द्वारा लिखे गए अभ्यावेदन है जिससे इस कार्यालय से प्रदान नहीं किया जा सकता. बिंदु क्रमांक 2 से संबंधित पत्र श्री राजीव स्वयंसो के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शासन को प्रस्ताव में शामिल है अतः प्रदान नहीं किया जा सकता. बिंदु क्रमांक 4 उक्त आदेश श्री जैन को आयुक्त कार्यालय में संलग्न किए संबंधी जो 1 पृष्ठ उपलब्ध है नियमानुसार 2 रुपए प्रति पृष्ठ के मान से शुल्क का भुगतान चालान मद से किए जाने पर प्रदाय की जा सके. तो इन्होंने कह दिया कि बिंदु क्रमांक 4 पर हम आपको दे देंगे, बाकी पर हम आपको नहीं दे सकते. 6 के संबंध में इन्होंने कुछ नहीं कहा. आई चैलेंज दिस ऑर्डर इन एन अपील. That is my appeal is then the appellate authority passed the order in annexure P3. P3. ठीक है, जी. क्या कहा उन्होंने? I'm sorry, Manoj, P3 is my appeal. P4 is the order passed by the appellate authority. इन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन आपको दी जा सकती है एक्सेप्ट मालॉर्ड्स में प्लीज सी दैट ऑर्डर. जी, पेज 18 में देखें सर. प्रकरण का अवलोकन किया गया सूचना टॉप में पढ़ रहा हूँ सर. जी, पेज 18 में प्रकरण का अवलोकन किया गया. सूचना का अधिकार नियम के तहत अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी 7 बिंदुओं पर जानकारी चाहिए गई थी. लोक सूचना अधिकारी वरिष्ठ जिला पंचायत मुख्यालय भोपाल द्वारा दिनांक क्रमांक 4 की जानकारी कार्यालयीन पत्र इतना 18/4/19 द्वारा अपीलार्थी को प्रदाय की गई है एवं बिंदु 1, 2, 3, 6 एवं 7 के नियमानुसार जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है. बिंदु क्रमांक 5 स्वयंसो से उपपंजीयक द्वारा महानिरीक्षक पंजीयक को प्रस्तुत करना आवेदन पत्र है जो प्रदाय नहीं किया जा सकता. तो इन्होंने सारे इश्यूज पर कह दिया एक्सेप्ट इशू नंबर 5. पाँच. देन आई फाइट सेकेंड अपील. जी, नाउ इन द सेकेंड अपील लेकिन 5 नंबर बिंदु तो देख लें क्या है.
5 सर इन्होंने कहा कि उसमें भी मिल गई सर मुझको। अच्छा। उन्होंने दी रिस्पॉन्ड नंबर 2, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर पास्ड एन ऑर्डर एंड डायरेक्टेड फॉर सप्लाई ऑफ द इंफॉर्मेशन टू मी जी ऑन ऑल द इश्यूज। जी। दैट ऑर्डर इज पेज 28, 27, 28 पर। नहीं सर, वो उससे पहले है, अच्छा पेज 22 पर है। अच्छा जी, इससे इन्होंने कह दिया सारी इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है इसके बाद सर इन्होंने मुझको एक लेटर लिखा पीआईओ ने जी कि आपको जानकारी, आप देखेंगे सर नेक्स्ट P7 जी P7 में इन्होंने एक लेटर मुझे लिखा, उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भ पत्र के संदर्भ में संबंधित शाखा द्वारा विषय से संबंधित उपलब्ध कराए गए 3 पृष्ठों हेतु नियमानुसार ₹2 प्रति पृष्ठ के मान से शुल्क का भुगतान, चालान मद, इतना प्रशासनिक सेवा, इतना इतना की जानकारी प्रदान की जा सके। इन्होंने कहा 3 पेज हैं, आप जो है ₹2 के हिसाब से ₹6 जमा कर, करा दिया आपने। जबकि मेरी इन्फॉर्मेशन 24 पेजेस की थी, 24 पेजेस में आना था उसने इन्फॉर्मेशन में। तो मैंने इनको ₹6 जमा कर दिए जी और इनको मैंने लिखा नेक्स्ट पेज में जी ₹6 में भेज रहा हूँ। मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी दैट वाज कंटेन इन 24 पेजेस, लेकिन मैंने लास्ट में लिखा सर कृपया 3 पृष्ठों की जानकारी अधिवक्ता श्री सोयंसो को उपलब्ध कराएं जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित है। शेष 20 पृष्ठों की जानकारी प्रदान करने हेतु 3 दिवस की अवधि में मुझे अनिवार्य रूप से अवगत कराएगा। क्योंकि 3, हमने कहा ये 3 पेजों का जो आप दे रहे हैं उसका ₹6 जमा कर रहे हैं, बाकी की जानकारी आप क्यों नहीं दे रहे ये बता। जी उसके बाद सर इन्होंने फिर नहीं दिया। देन आई मेड अ कंप्लेंट टू दी रिस्पॉन्ड नंबर 2 that they are not complying with the order passed by the my lord the state information commissioner। ये कौन से 20 पेज हैं ये बताइए। पे- 3 पेज पेज तो दे 30 दिए आपको। पेज 32 पे मैंने लिखा है, क्या लिखा पढ़िए। दिस इज राज्य मुख्य सूचना आयोग सूचना भवन शिकायत अंतर्गत धारा सूचना का अधिकार अधिनियम स्वयंसो सविनय निवेदन है कि उक्त संदर्भित आदेश द्वारा लोक सूचना अधिकारी कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयक मध्य प्रदेश को आदेशित किया गया था कि आवेदक को वांछित जानकारी उपलब्ध कराई जाए। आदेश की प्रति प्रदर्श एक संलग्न है। यह कि उक्त आदेश का पालन लोक सूचना अधिकारी द्वारा नहीं किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्र दिनांक 17/6/20 से 3 पृष्ठों की जानकारी प्रदान किए जाने हेतु ₹6 जमा करने की जानकारी दी थी, जिसके तारतम्य में उक्त राशि जमा कर शेष जानकारियां भी प्रदान किए जाने का अनुरोध पत्र दिनांक 1/9/20 से किया गया था। लोक सूचना अधिकारी एवं आवेदक के उक्त पत्र की प्रति संयुक्त रूप से प्रदर्शन 2 संलग्न है, किंतु आवेदक को उसके आवेदन में दर्शित बिंदु क्रमांक 4 एवं 5 से संबंधित 4 पेज जानकारी के रूप में दिए गए, शेष जानकारी आवेदक को नहीं दी गई। लोक सूचना अधिकारी के पत्र दिनांक 21/9/20 की प्रति प्रदर्श 3 संलग्न है। यह कि लोक सूचना अधिकारी सूचना प्रदान करने से बचने के लिए श्रीमान के आदेश का पालन करने के बजाय विभिन्न प्रकार के पत्राचार कर रहे हैं, जो अनुचित है। क्योंकि सूचना का अधिकार आवेदन तथा राज्य मुख्य सूचना आयोग का आदेश स्पष्ट है और उसमें चाहे गए दस्तावेजों का पत्र क्रमांक के साथ स्पष्ट वर्णित है। लोक सूचना अधिकारी के पत्र इतना छाया प्रति 4 संलग्न है। यह कि आवेदक ने दस्तावेजों का अवलोकन किया है, चाहे गए दस्तावेज लोक सूचना अधिकारी के समक्ष उपलब्ध है, लेकिन श्रीमान के आदेश की स्पष्ट अवहेलना करते हुए इसके बाद सर इन्होंने जब कोई कार्रवाई इस पर नहीं किया, मैंने इनसे कहा कि आपको सेक्शन 20 में अधिकार है कि अपने ऑर्डर को आप एग्जीक्यूट करा सके और उसमें फाइन लगाने का भी अधिकार है। जब इन्होंने कुछ नहीं किया, देन आई फाइल्ड दिस पिटीशन। ठीक है, तो इनको डायरेक्ट कर देते हैं कि आप सेक्शन 20 में कार्रवाई करिए। अब सर इनका मैं थोड़ा सा बता दूं सर, ये नंबर 2 का भी रिप्लाई मैं आपको बताऊंगा। मतलब he has filed a reply which is incorrect and I'll just point out from his reply। पहले तो सर जरा स्टेट का रिप्लाई देख लें। स्टेट इज अ फॉर्मल पार्टी इन दिस केस बिकॉज इट इज मालूड दी। क्या करना है स्टेट का रिप्लाई देख के? इनका रिप्लाई आई ना डायरेक्ट। सर स्टेट का रिप्लाई जरा देख लें। स्टेट has gone the OIC to what extent the OIC has gone while filing the reply। He goes out of the malod case। He uses his personal knowledge, the things which are not involved in the case। He brings out all those things in the case and malords में please see इतना डिटेल्ड रिप्लाई इन्होंने फाइल किया है। दूसरे केसों का सब reply on behalf of respondent number 1, 3, 4 and 5। This reply runs into। अरे ये तो आप रिस्पोंडेंट काउंसिल की कैपेबिलिटी को क्यों नहीं सैल्यूट करते हैं? सर ये अगर इतनी एफिशिएंसी, बहुत अच्छी बात है सर एफिशिएंसी। ये कौन है? चंद्रकांत मिन्नी, अजय शुक्ला है? नहीं सर, मैं तो गवर्नमेंट एडवोकेट। इट इज दी OIC सर हु OIC तो क्या समझता है? OIC आपको भी मालूम है, आप भी उस ऑफिस में रहे हैं। OIC कितनी जानकारी लेकर आता है?
और फॉर्मल पार्टी है सर इसके। ठीक है, छोड़िए, अब इनके कंडक्ट से क्या करना। जहां जानकारी लानी है वहां नहीं लाते। छोड़िए उस बात को। अब सर इनका रिप्लाई रिस्पॉन्ड नंबर 2 का देखिए। हाँ, रिस्पॉन्ड नंबर 2, ये रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने रिप्लाई में कहा है सर, देयर आफ्टर आई हैव फाइल्ड रिजॉइंडर, काइंडली सी रिस्पोंड नंबर 2 सेज दैट मैंने एक ऑर्डर, आपकी जब कंप्लेंट मिली तो कंप्लेंट पर मैंने एक ऑर्डर किया है एनेक्चर R2 दैट इज पेज 18। इनके रिप्लाई के साथ देखें सर, पेज 18 देखें सर काइंडली। ये कहते हैं शिकायतकर्ता श्री राजीव जैन अनुपस्थित। इन्होंने मुझे कब बुलाया, किस नोटिस से बुलाया, किस लेटर से बुलाया, देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड। उसके आगे लिखते हैं शिकायतकर्ता को शिकायत में उल्लेखित पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा गया सूचना पत्र अदम तामील प्राप्त हुआ। ये भी इन्होंने नहीं लगाया। ये कब भेजा, अदम तामील प्राप्त हुआ, ये नहीं है सर। मैंने रिजॉइंडर में लिखा है, उसके बाद भी इन्होंने फाइल नहीं की। कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्य प्रदेश भोपाल के लोक सूचना अधिकारी श्री KS रावत उपस्थित। शिकायत का उत्तर प्रस्तुत किया। शिकायतकर्ता द्वारा आयोग में प्रस्तुत शिकायत 17/11/2000। इसको बता दीजिए, एक से रुक जाए, यहीं रुक जाते हैं ना जी। ये कब भेजा आपने स्पीड पोस्ट से इनको रजिस्टर की वो कॉपी? वो मैं नहीं लगा, नहीं लगाइए ना, मैं पेश करते था, मतलब लगाइए। clearly I permit नहीं to- नहीं नहीं, हाँ मैं वो लगा देता हूँ। वो लगाइए और बताइए, बिकॉज विल नॉट अलाउ दिस काइंड ऑफ स्टैंड इन द हैंड्स ऑफ अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। मनोज वो मैं वो पेश करिए, पेश कर देता जो लिफाफा आपको प्राप्त हुआ वापस, रजिस्टर डिस्पैच रजिस्टर की कॉपी पेश करिए जिससे आपने उसको स्पीड पोस्ट से भेजा था। उसके अलावा सर इनके एफिडेविट में ये कहते हैं, एक तो ये है, दूसरा ये कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन 4 और नंबर 5 की अवेलेबल नहीं है, जबकि 4-5 की इन्फॉर्मेशन मिल गई। ये कहते हैं कि आपको 4 और 5 आपको नहीं दी जा सकती क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है, जबकि 4 और 5 की इन्फॉर्मेशन PIO कहता है कि वो मैंने दे दी। मैं भी कह रहा हूँ कि वो मिल गई, 4 और 5 मिल गई, बाकी नहीं मिला। इसके अलावा क्या आपके यहाँ भी ऑर्डर्स क्या स्टेनोग्राफर लिखने लगे हैं क्या आजकल? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। जैसे तहसीलदार, SDO, कलेक्टर के ऑर्डर लिखे जाते हैं, ऐसे आपके भी ऑर्डर लिखे जाने लगे हैं क्या? नहीं सर, ऐसा तो सर कुछ ये नहीं है। ऑर्डर एफिडेविट अगर आप पढ़ेंगे बिल्कुल एब्सोल्युटली माय लॉर्ड, ही हैज नॉट केयर टू सी टू व्हाट इज रिटन इन दिस। ये कहता है मैंने 4 और 5 की जानकारी नहीं मिलने के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत की, जबकि मैंने लिखा है कि 4 और 5 की जानकारी मिल गई, बाकी पर जानकारी नहीं। इससे शिकायत देखते हैं आपकी। जी मेरी शिकायत देखें सर, मैंने अभी पढ़ी थी वो। आई विल जस्ट वंस अगेन रीड इट मदर। पेज नंबर जी पेज नंबर है सर 30, अभी बताया था आपने। पेज नंबर 32 देखेंगे सर काइंडली। 32 जी जी। पेज नंबर 32। आप खुद ही को नहीं मालूम आप क्या लिख रहे हैं, इसको तो मैं पढ़ चुका अभी। नहीं मैंने लिखा है स्पष्ट रूप से यही नहीं बता रहे आप कौन से 20 पेज हैं, किस बिंदु से संबंधित 20 पेज की बात कर रहे हैं आप। योर एप्लीकेशन इज वेग। सर। मेरी एप्लीकेशन इसलिए वेग नहीं है क्योंकि अथॉरिटी के सामने मेरी एप्लीकेशन पहले बहस हो चुकी, अथॉरिटी ने उसमें ऑर्डर कर दिया। आपने ये जब आपको 4 और 5 की जानकारी मिल गई तो किस बिंदु की जानकारी चाह रहे हैं आप? सर अथॉरिटी ने भी ये कहा, काइंडली सी दिस होल केस हैज बीन प्रोसेस की आइटम नंबर 1 2 3 4 5 दे ऑल आर नोन बिकॉज इन माय एप्लीकेशन आई हैव सेड व्हाट ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी पास्ड एन ऑर्डर सेइंग दैट यू कैन बी गिवन इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट एक पॉइंट की इंफॉर्मेशन होने का दी जा सकती है। इश्यू नंबर 5। तो उनको मालूम है इश्यू नंबर 5 क्या है। फिर अपीलेट अथॉरिटी ने कहा कि नहीं आपको सारे बिंदुओं पर इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एक को छोड़ के, 4 बिंदु को छोड़ के। नहीं सेकंड अपीलेट अथॉरिटी ने सब पर मिल। सेकंड ने कहा, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने कहा एक बिंदु को छोड़कर, एक को छोड़कर। जी अब आपको किस बिंदु की जानकारी नहीं मिली, इसको पढ़ के बताइए P10 को। सर मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्लीज नो, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट आउट, अगर आपके पिटिशनर को एप्लीकेशन लिखना नहीं आती तो वी आर नॉट गोइंग टू टीच हिम। सर मेरा प्लीज नहीं सॉरी, ये बता दें इसको पढ़ के कि किस बिंदु की जानकारी वो मांग रहे हैं, इससे शिकायत कर रहे हैं, ये बताइए, पढ़िए। सर मेरा सबमिशन ये है, am I required to say that when the authority said you are required to say it? Sir kindly please read it again. ये read this P10 को जी पढ़िए, सविनय निवेदन है संदर्भित आदेश द्वारा लोक सूचना आराम अधिकारी। से पढ़िए से समझ सके उसको। जी मैं बिल्कुल आराम से पढ़ूं। सविनय निवेदन है कि संदर्भित आदेश द्वारा लोक सूचना अधिकारी कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयक मध्य प्रदेश को यह आदेशित किया गया था कि आवेदक को वांछित जानकारी उपलब्ध कराई जाए। आदेश के प्रति प्रदर्श 1 संलग्न है। यह आदेश कौन सा है सर? जो ये राज्य सूचना आयुक्त ने
पास किया है। नहीं, इनको ये इतने सीनियर ऑफिसर हैं, इनको चिट्ठी लिखनी नहीं आती। जब यहाँ लिख रहे हैं आदेश की प्रति प्रदर्श एक संलग्न है, हाँ। तो यहाँ नीचे एंडोर्समेंट में आता है कितने संलग्न लगे हैं, एंड दो संलग्न शुड हैव बीन पार्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन। अब ये तो मैं नहीं बोल सकता कि वो जो है, पर इसके आगे देखें सर हाँ, इसको। चलिए आगे पढ़िए। यह है कि उक्त आदेश का पालन लोक सूचना अधिकारी द्वारा आप नहीं क्यों किया। नहीं बोल सकते? आपको नहीं मालूम कि जब एनक्लोजर लिखा जाता है तो एनक्लोजर सर अब ये माइनर एसडी तो हम यहाँ सीखने ना नहीं आए हैं सर, ना हम अपने क्लाइंट को सिखा सकते हैं माइनर एसडी सर। ये सब चीजें, ये बिकॉज दिस इज अ लेटर रिटन बाय हिम इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। ठीक है, चलिए इट्स नॉट एन ऑफिशियल लेटर, चलिए। सो आई कांट से कि दिस ऑफिशियल लेटर, बिकॉज इट्स अ लेटर रिटन इन अ पर्सनल कैपेसिटी। ठीक है, चलिए। यह कि उक्त आदेश का पालन लोक सूचना अधिकारी द्वारा नहीं किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्र दिनांक 17/6/20 से 3 पृष्ठों की जानकारी प्रदान किए जाने हेतु ₹6 जमा करने की जानकारी दी थी, जिसके तारतम्य में उक्त राशि जमा कर शेष जानकारियां भी प्रदान किए जाने का अनुरोध 1/9/20 से किया गया था। लोक सूचना अधिकारी एवं आवेदक के उक्त पत्र की प्रति संयुक्त रूप से प्रदर्श 2 संलग्न है, किंतु आवेदक को उसने आवेदन में दर्शित बिंदु क्रमांक 4 एवं 5 से संबंधित 4 पेज की जानकारी के रूप में दिए गए। अब यहां मैंने स्पष्ट कर दिया सर कि मेरे आवेदन पत्र में जो 4 और 5 बिंदु की जानकारी है वो मुझे मिल गई है, जानकारी के रूप में दिए गए। शेष जानकारी आवेदक को नहीं दी गई, ये मैंने यहां स्पष्ट कर दिया। इनका अगर आपने ऑर्डर देखा 21वां वाला, उसमें लिखते हैं कि 4 और 5 की जानकारी आपने चाहिए। यस, यू फाइल दे लिखिएगा। Shri Vijendra Singh Chaudhary is directed to file copy of the envelope which was sent by the respondent number 2 office for service on the petitioner as is mentioned in annexure R22. R2. जी R22 है। R Roman 22 मतलब R2-2 dated 9/2/2021 and also copy of the dispatch register to point out that as to when said notice was dispatched from the office of the Madhya Pradesh State Information Commission. Full stop. It will also be pointed out that once information under point number 4 and 5 was already provided as is accepted by the petitioner in his communication contained in annexure P10, then on what basis the commissioner has mentioned that learned chief information commissioner has mentioned in the said order that complaint was made in regard to non-supply of information under point number 4 and 5. Prima facie, it appears that it is a case of non-application of mind on part of the state chief information State commissioner. Information Commission। स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन It may be नहीं, observed it's that चीफ है that ना, particular post मुख्य सूचना अच्छा, आयुक्त है मुख्य ना। लिख दिया सर। आप मुख्य तो पढ़िए। जी जी सर। अब आप बोलेंगे कि ये भी आप नहीं, नहीं सर, मैं- सिखा सकते। but that may not be observed instead of that respondent may be नहीं, सॉरी। दो श्री Vijendra Singh Chaudhary submits that this may not be observed, but this is apparent from the face of the record as the order is signed by the Chief Information Commissioner, and therefore an observation, generalized observation cannot be given against the whole institution when the order on face of record appears to be cryptic as has been passed by the Chief Information Commissioner. Therefore, the objection raised by Shri Vijendra Singh Chaudhary is overruled. लिस्ट करने का ऑर्डर। हाँ, लिस्ट इन द वीक कमेंसिंग 21 अगस्त 2023। ग्रेट। My lord, in this case, as per my instructions, my lord, that the petitioner was died, my lord, and his son was also died, my lord. I tried my level best to connect to the LRs, my lord, but I failed to do so. my lord. क्या करना क्या है? अपना तो SPC कर दे चुके मैटर पर SPC तो नहीं करूंगा मैं। रिकवरी का either you plead no instructions or you take time to substitute the legal heirs. SPC is not the मैटर्स नहीं, रिकवरी में SPC cannot be used to make a meeting between you and your client.
client is no more, my lord. क्या कर सकते हैं His आप son was also सब्स्टिट्यूट died. करिए या मैं कह देता हूँ कि client is no more, petition has abated because you no substitution has been brought on record. बेटा भी खत्म हो गया। Given the death certificate. हाँ, क्या कर सकते हो काम क्या करें And petition. either you are seeking time to substitute the legal heirs or I will dismiss it. I'll grant you time. I have no objection. Grant me time, my lord. देखिएगा श्री नित्यानंद मिश्रा prays for and is granted 8 weeks time to file 7 days time to file an appropriate application for substitution of legal heirs of the petitioner. 2 weeks कर दे सकता हूँ। 2 weeks कर दीजिए चलिए Number 28. संजय कुमार तिवारी, सचिन तिवारी, कंडोनेशन ऑफ डिले और जी बताइए सर एडमिशन और कंडोनेशन ऑफ डिले पे है 49 जी? डेज 49 डेज का हर्ड ऑन आइए 15766 15766 बटे 2022 an application for condonation of 49 days of delay in filing the appeal. Same is condoned for the reasons stated in the application, duly supported with an affidavit of the appellant Naveen alias Ankit Kahan. चलिए मेरिट्स पर बताइए जी सर 16,56,000 का सर हमने वहाँ पे ट्रिब्यूनल में फाइल किया था और यहाँ पे सर 2 लाख के इन्हेंसमेंट के लिए आए हैं सर। क्या है क्या बताइए ना ग्राउंड तो पैरा बताइए 18 देखना पैरा 18 18 पढ़िए फ्रैक्चर है नियर आईज लेग और 4 फ्रैक्चर्स हैं। डॉक्टर को एग्जामिन नहीं किया इन्होंने हाँ और इनको 2,50,000 तो मेडिकल एक्सपेंसेस दिलाए हैं। हाँ 60,000 रुपए पेन एंड सफरिंग में है। कहाँ फ्रैक्चर है सर अंकित पैरा का 18 उसकी आंख के ऊपर दाएं जी, पैर क्या? आंख के ऊपर जी दाएं पैर के घुटने की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया तो 60,000 रुपये वो दिला दिए 600 रुपये घुटने में फ्रैक्चर हो गया तो 3 महीने 4 महीने तो लगेंगे जुड़ने में ठीक लॉट और क्या दिला दिए स्पेशल डाइट में 12,600 कहाँ है सर ये 12 नहीं के हिसाब से इस अवधि में स्वाभाविक है एक व्यक्ति की ये तो विशेष आहार 600 दोनों को स्पेशल डाइट में 12,000 स्पेशल डाइट और दोनों मिलाकर अटेंडेंट मिलाकर 12,000 12,600 जी किस तारीख का एक्सीडेंट है ये 29/7/21 29/7/21 इसको बढ़ा देते हैं चलिए क्या और ट्रांसपोर्ट में 5,000 है और लॉस ऑफ इनकम ड्यूरिंग ट्रीटमेंट में 15,000 है। वो भी कम है देखिएगा और फ्यूचर ट्रीटमेंट के लिए भी कुछ दिला देते हैं जी बढ़ जाएगा जो देखिएगा दिस अपील इज फाइल्ड और बिल विल पूरे दिला दिए इन्होंने नहीं सर अब- बिल में सर ये टोटल 2.5 लाख इन्होंने किया है हाँ। कि आपने बिल जो है वो 21 में दिया है सर हाँ। कि बिल कई बिल जो है दोबारा से फाइल कर दिए तो पैरा तो सर 21 में हमको पूरा कंसीडर किया है सर कई हमको जो डबल भी है दिया बिल उनने हमने पेश कर दिया सर हाँ। वहाँ पे सर जो भी बिल हमको हॉस्पिटल से मिला अरे भैया ठीक है आपने जी। बहुत मेहरबानी करी ये तो बता दीजिए कि कितने के एक्चुअल बिल थे सर अच्छा पैरा इन्होंने 21 लिखा देख ले सर एक हाँ देख लिया देखिएगा दिस अपील इज फाइल्ड by the claimant being aggrieved of award dated 29th July 2022 passed by Learned Motor Accident Claims Tribunal Anuppur in MACC number 57 claim case number 57/2021 on the ground that Learned Tribunal has not awarded any amount under the head of pain and suffering, has not awarded any amount under the head of fracture, full stop. It is submitted that tribunal has awarded meager amount of rupees 12,600 under the head of attendant and स्पेशल डाइट special diet, sum of rupees 5,000 under the head of transport and 15,000 under the head of loss of income. Next para, it is submitted that a claimant had suffered fractures over the
ri- over the eye of the claimant, that is on the parietal bone, right leg, in the knee of right leg, पैरा 9 में दिया है सर. full stop. पैरा 9 में भी पढ़ लेते हैं. पेज नंबर 13. कहाँ दिया है पैरा 9 में? पैरा 9 में दिया सर, दाएं आंख के ऊपर कहाँ भौं लिख की. रहे हैं? कहाँ पढ़ रहे हैं? सर ये ऊपर से सर 10वीं लाइन में. हैं? पैरा 9 सर ये. जिनका एफिडेविट फाइल किया था उसको कंसिडर कर रहा अच्छा. ठीक. हाँ. तो फाइंडिंग है पैरा 18 में. हाँ, उसमें यही है. And besides causing 3 other fractures below the knee and damage to the tongue. Full stop. Next para. It is submitted that appropriate amounts be enhanced under different heads. Next para. As far as claim for nutritious diet and attendant is concerned, taking this fact into consideration that accident took place on 29/7/2021, comma, and such fractures takes about 3 to 4 months to heal, comma, a sum of rupees 20,000 under the head of attendant for a period of 4 months at the rate of rupees 5,000 per month is awarded. Similarly, another sum of rupees 20,000 is awarded under the head of nutritious diet. Thus, there will be enhancement to the tune of rupees 27,400 under the head of attendant and nutritious diet. Full stop. Tribunal has awarded only a sum of rupees 15,000 under the head of earning capacity, whereas on the date of the accident, minimum wages even for an unskilled laborer were to the tune of rupees 8,700 per month. Thus, for a period of 4 months, it comes out to rupees 34,800. Against this, only a sum of rupees 15,000 is awarded. Thus, there will be enhancement to the tune of rupees 19,800. Full stop. Tribunal has not awarded any amount under the head of future treatment, physiotherapy, future treatment, etc. Therefore, another sum of rupees 15,000 is awarded under the aforesaid heads, taking total enhancement to rupees 62,200, which will be admissible in favor of the claimant. Other terms and conditions of the award shall remain intact. In above terms, appeal is disposed of. थोड़ा फ्रैक्चर में दे दें. हैं? फ्रैक्चर में दे दें. दे दें. 25,000 और कर. तो चलिए सुनिए, 60,000 की जगह उसको बढ़ा के 40,000 और कर दीजिएगा, 1 लाख कर दीजिएगा 4 फ्रैक्चर को देखते हुए, तो टोटल जो है ये हो जाएगा 1,02,200 एनहांसमेंट हो जाएगा. चलिए. नंबर 29 29 My lord, may I please to consider, my lord, the last order sheet dated 28/4. पेमेंट्स ऑफ फ्रैक्चर में 40,000 देना दीजिएगा, बस अलग से एनहांसमेंट मत लिखिएगा. जी. My lord, the last order sheet dated 28/4/23 may kindly be seen, my lord. My lord, the petitioner was directed to supply me a copy of the petition, my lord, in both the cases. 28/3/20. 28/4/23, my lord. 28/4/23. Copy of the writ petition along with the enclosures to learned counsel. क्यों भूल जाते हैं आप? 3 महीने हो गए. स्टे लेने के बाद यही होता है. ऐसा नहीं था. तो फिर क्या है? वैसे भी Why copy has not been filed? इनके खिलाफ तो I'll supply note. मेरे पास I was not having it. जी. It's fine. देखिएगा, श्री अनिल लाला फॉर द पिटिशनर, श्री विवेक शर्मा लर्नेड डिप्टी एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट, श्री शोभादित्य फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 4. नेक्स्ट, श्री शोभादित्य complaints of non-compliance of order dated 28/4/2023, whereby learned counsel for the petitioner was directed to supply a copy of the writ petition along with the enclosures. Full stop. Let compliance be made during the course of the day with acknowledgement to be filed in the registry. Full stop. Let reply be filed within further period of 7 days, list thereafter. I move that. Interim order. IR if any to continue. I'll do it.
Number 30, Rajesh Kumar Padhyay. Rajesh Kumar Padhyay. Petitioner has filed this petition against the order dated Rajesh Kumar Pandey. 21/2/22, my lord, whereby the additional collector has allowed the application for condemnation of delay. जी In 1964, my lord, the mutation was done, my lord, by the Tehsildar. तो उसके खिलाफ अपील नहीं होती, एसडीओ के ऑर्डर के No, my बाद lord, सीधे रिट में आएंगे आप? No, my lord. After that, my lord, the respondents have filed the appeal after more than delay of more than 41 years. Appeal was filed. That appeal was dismissed. Continuation of delay application was dismissed. The application order of SDO is of dated 16/2010. After that, the respondent number 1 to 7 has preferred the revision after बिफोर दी before the additional collector. अच्छा On 18/6/2021, even in the revision petition, my lord, the delay was of 11 years 4 months. 11 years 11 years for delay of hearing, and but additional collector has allowed the application for continuation of delay, against which behavior. बताइएगा बिगर आपको सुने No, my lord, 11 साल की डिले किस कारण से कंडोल की है एडिशनल कलेक्टर साहब ने, बताइए तो। they have not written any. जी आप बताएंगे शासकीय वकील साहब क्या लिखा है इन्होंने डिले कंडोल करने का? सर पेज 62 में से देखिए, Their application में 62 में, पेज नंबर 62 ही देख रहे हैं जी। क्या कारण क्या दिया इन्होंने, बताए ना। सर ये पैराग्राफ 4 में निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन में यह बताया गया कि सर्वप्रथम जानकारी 7/6/2021 को हुई, जिसकी नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसकी नकल 15/6/2021 को प्राप्त हुई। नकल प्राप्त होते ही लेकिन ये कैसे, ये कहाँ से आया ये कि इनको जानकारी निगरानीकर्ता को 7/6/21 को हुई? एसडीओ का ऑर्डर एक्सपार्टी था क्या? No, man. देखें एक्शन एसडीओ का ऑर्डर इस पेज नंबर 45 में 45 प्लीज पढ़िएगा जी। even in the application they have not stated how they got the knowledge of the order. कैसे जानकारी हुई इनको? ये ऑर्डर है 2010 का, 11 साल बाद कैसे जानकारी हो गई? और इनफैक्ट खुदियार खान साहब के साइन है इसके ऑर्डर शीट के ऊपर। आई हैव टू ऑब्जर्व दैट। पेज 46 पे देखिएगा जी। आप 46 से 57 के साइन मिला लीजिए। इनिशियल्स किए हैं इन्होंने खुदियार खान साहब ने। खुदियार खान इज द petitioner. अच्छा पिटिशनर है आप, अच्छा ओके। Create is the application. कैसे जानकारी हुई बताएं ना थोड़ा सा। सर पेज 49 में अपील निगरानी के आधार। अरे भाई हम तो समझना चाहते हैं कि कलेक्टर साहब ने क्या कारण दिया है। जी। यह कि निगरानीकर्ता के पिता पुलिस सेवा में कार्यरत थे तथा अपने सेवा काल में विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरित होते हुए सेवा करते रहे। निगरानीकर्ता कहाँ रहे बताइएगा ना, आवेदन से कहाँ रहे। तो आवेदन इसमें लिखना चाहिए ना। आवेदन इज P8 में। P8 पेज नंबर 52 में 52 पढ़े, उसमें कहाँ रहे वो। आपको भी तो सुविधा रहे हमारे आदेश को चुनौती देने में, इतना तो लिखा दें। फिर आपको जाके झूठ सच बोलना पड़ता है, उससे सुविधा रहेगी कि हम लिखा देंगे पूरी बात। बताइए क्या कहा कलेक्टर साहब ने, इस एप्लीकेशन में क्या लिखा हुआ है? धारा 5 का आवेदन पढ़िए। सरकारी वकील साहब पढ़िए धारा 5 का आवेदन। जी। दो बिंदु बता दीजिएगा, धारा 5 का आवेदन पढ़ लीजिए और ये बताइएगा कि कलेक्टर ने रिकॉर्ड कब बुलवाया। एंड उन्होंने
रिकॉर्ड का क्या अवलोकन करके क्या फाइंडिंग दी, 2 बिंदु बता दीजिएगा बस, because I'll be basing my judgment order on these 2 grounds only. कहाँ फाइंडिंग है इनके पूरे रिकॉर्ड में इनका, क्योंकि कहना यह है कि इनको कभी भी सूचना नहीं दी गई अधीनस्थ कार्यालय को। रिकॉर्ड बुलवा लेता हूँ। नहीं रिकॉर्ड क्या बुलाएंगे, इसको पढ़ के बताइए ना कलेक्टर साहब के आदेश को। मेरे द्वारा तर्कों पर श्रवण के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 14/2/2006 से आदेश दिनांक की आदेश पत्रिका 24/9/2010 तक अवलोकन किया गया, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 5 के आवेदन पत्र कभी भी कोई तर्क नहीं सुने गए। अन्य अंतरिम आवेदन सिर्फ निराकरण किया गया है। एक सेकंड, वी आर नॉट ऑन दैट इशू। इनका ये कहना है कि इनको कभी भी नोटिस ही नहीं दिए गए एसडीओ के सामने। नाउ वेयर इज द फाइंडिंग दैट वेदर नोटिसेस वर सर्व्ड बिफोर द एसडीओ और नॉट? दिस ऑर्डर इज क्रिप्टिक। आपकी कंसेंट लिखा के ऑर्डर क्रिप्टिक है, सेटिसाइड कर रहा हूँ, वापस भेज रहा हूँ मैटर को। सर मेरा आपकी कंसेंट लिखाऊंगा मैं। नहीं सर, मेरा निवेदन ये है सर कि एक बार मैं रिकॉर्ड बुलवा करके इसका परीक्षण करवा लेता हूँ कि ठीक है, लिखिएगा। लिखिएगा। रिकॉर्ड अभी तक क्यों नहीं बुलवाया? इतने दिनों से पेंडिंग है मैटर सर ये। इसके पहले लिखिएगा। डायरेक्शन वाज नॉट टू द स्टेट टू प्रेजेंट द रिकॉर्ड माय लॉर्ड। अभी भी हम डायरेक्शन नहीं दे रहे। यू आर सीकिंग टाइम टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड, आई एम नॉट डायरेक्टिंग यू। सर एज पर द मटेरियल व्हिच इज अवेलेबल अलोंग विद द लिखिएगा, श्री विवेक शर्मा लर्नेड डिप्टी एडवोकेट जनरल, after being not able to convince that on what basis learned additional collector schedule passed the impugned order dated 21/2/2022, raised for time to call for the record and satisfy himself. Full stop. Let certified copy of the record be also produced by the respondents on record along with their reply, if any. Let reply be filed within 2 weeks along with the complete certified copy of the record. interim order में भी continue। Interim order to continue. My lord, I am from respondent number 9. डाल दीजिएगा सबका नाम। Sushil Tripathi. Number 31. Number 31 to the Anil Nana. Lord, the order impugned is annexed to P5. उसमें लिखिएगा रिकॉर्ड फ्रॉम द कोर्ट ऑफ इनिशियल फर्स्ट इंस्टेंस टिल द कोर्ट ऑफ एडिशनल कलेक्टर शेड्यूल। पूरा रिकॉर्ड फाइल करिए, देखते हैं। मैं प्रोसीडिंग्स में प्रेजेंट कर दूंगा सर अगर नहीं, पूरा रिकॉर्ड सर्टिफाइड कॉपी पेश कर दीजिए सर। क्या है ये? Lord, in this matter there is an order by collector, my lord. That is annexed to P5, my lord. The reply of the state is awaited in this case, my lord. I'm praying for 3 weeks. की पिटीशन है ये? 2022। नोटिस हुआ था 27/4/22 को। जी। श्री अनिल लाला फॉर द पिटिशनर, श्री विजेंद्र चौधरी फॉर I'm for respondent number 4, madam. Respondent number 4, Shri Vivek Sharma, London Deputy Advocate General for State, raised for time to file reply. कितना समय चाहिए? For 4 weeks time. Raised for 4 weeks time to file reply. 4 weeks time is granted. IR to continue. List in the month of September 2023. My lord, I have moved an application for modification of order dated 4/5/2022, by which the court has been granted restraint in favor of the petitioner with the deposition of 30% of the amount determined by the authority. क्या है? कौन सा ऑर्डर है?
4/5/2022। ये तो जिसका ऑर्डर है उसके पास जाइए ना, अवश्य ये इसका मॉडिफिकेशन हम कैसे करेंगे? लिस्टेड रजिस्ट्री आप क्या लिस्ट करते क्यों भाई, क्या प्रावधान है कानून में? जिसका ऑर्डर है वही मॉडिफाई करेगा कि कोई भी कर सकता है? वहीं जाएगी। Office to the petitioner is seeking modification of order dated 4/5/22 passed by a coordinate bench. Full stop. Shri Vivek Sharma, learned Deputy Advocate General, submits that, along with the petitioner's counsel, submits that order for modification can be passed by the same bench. Office to examine and list before the same bench which had passed order dated 4/5/22. हैं? Lordship, in this case on 1/7/23, my lord, matter was tried in mediation, and mediation मतलब that the compromise has been take place. Compromise हो गया? हाँ सर, उसी में हुआ सर कि both party मतलब they are agree to pay the amount of rupees 25 lakh thereafter on the basis of divorce petition. They will एक सेकंड, एक साथ 23 हाँ एक साथ 23 ही पढ़ रहे हैं सर. Mediation. तो ठीक है, आप एग्री करते हैं, क्वेश्चन कर दें ये. आई एम नॉट हैप्पी विद दी वर्डिंग्स ऑफ दी प्रोसीडिंग्स. सब फ्यूचर में दे दिया लड़की को, ये क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या देंगे क्या नहीं देंगे क्या मालूम है. आप अगर सेटिस्फाइड हैं तो ठीक है. वहाँ पे वापस लेंगे सर, इसके एविडेंस के बाद. क्या वापस ले लें? ये जो तो ये पिटीशन तो फिर in terms of the mediation agreement, it is disposed of with the direction that after compliance of these steps, parties will withdraw their cases against each other. Today, if you permit this petition to be allowed and questioning of the FIR is made, then are you sure that you will get all that what has been agreed before the mediator? पढ़ा आपने ये mediation report? नहीं सर, मेरे पास नहीं. तो सर वैसे भी वो बीएस जोशी का जजमेंट जो है 2003 वाला, उसकी लाइट में तो कॉम्प्रोमाइज, जब कंसेंट ये कॉम्प्रोमाइज होगा नीचे ट्रायल कोर्ट में, उसके आधार पे 498 के केस को क्वैश किया जा सकता. हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ. तो अभी नहीं होगा सर, अभी नहीं होगा. ये सब गलत लिखा हुआ है कि 5 माह के भीतर लगाएंगे. आप पहले डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करिए, तब हो जाएगा. फाइल है वहाँ पे. हाँ तो कब की डेट लगी है? नहीं 13B की एप्लीकेशन लग गई क्या? डाइवोर्स केस में सर नंबर लिखा है 13B जी. कब लगी? ये सर ये नंबर है, उसका केस नंबर है 94/2020. अरे भाई नहीं वो 13 लिखा है सर. एक पांडे जी, सर एक अभी तो आपने इसमें लिखा है कि डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करेंगे 5 माह के भीतर जी. फिर with the consent of the parties, this since they have reached to a compromise before the mediator Shahid Mohammed
and they have decided to withdraw cases against each other, comma, this petition in terms of the aforesaid compromise is allowed. Proceedings initiated against the petitioners under section 51 minutes. 498A, 315 and 506 IPC, read with section 4 of the Dowry Prohibition Act originating from case crime number 224 of 2020, registered at Police Station Peparia, are hereby quashed. Petition is disposed of. Parties to pursue their remedy in terms of the compromise मैं recorded before the mediator. हाँ. सर मेरा हालांकि बहुत हस्तक्षेप नहीं है इस वाले केस में, प्राइवेट पार्टी डिस्प्यूट है, लेकिन सर बीएस जोशी का जजमेंट जो है वो क्लियरली बोलता है। ये मीडिएटर को सिखाइए ना, ये कैसा मीडिएशन कर रहे हैं। उसमें क्या है कि 226 में क्वैशमेंट नहीं होगा, 226 रेड विद पावर्स ऑफ 482 सीआरपीसी, उसके पावर्स को कंबाइन करके हाई कोर्ट क्वैश कर सकता है। बीएस जोशी वो भी उस आधार पे, जिस आधार पे जैसे इनका डिवोर्स का केस है, डिवोर्स के केस में अगर कंप्रोमाइज हो जाएगा पार्टीज के बीच में, तो ये मीडिएटर को सिखाइए ना आप। ये इसके बाद सर 2018 में जैसे दीपक मिश्रा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कंप्रोमाइज किया, यदि बोथ पार्टी दे आर गोइंग ऑन कंटिन्यू एंड दे आर कंप्रोमाइज द मैटर, देन एफआईआर हैव बीन क्लोज्ड एंड मैटर हैव बीन कंप्रोमाइज। 2018 से पार्ट दीजिएगा, लिखिएगा। Let parties are request Shri Vivek Sharma submits that in the light of the decision of Supreme Court in BS Joshi, पूरा citation ले लीजिएगा इस लाइन में। This compromise can be accepted only when parties appear before the family court and obtain the decree of divorce. सर ये वाले सर 2018 CW 585। ठीक है, चलिएगा। Parties to examine this legal position list after 4 weeks. In the meanwhile, parties will be free to file an application for mutual divorce, sir, along with an application for condonation of cooling period. Readings complete है? नहीं सर, रिप्लाई नहीं आया है। 4 weeks time. Shri Sanjay K. Agarwal for the petitioner. Shri 2 weeks time. Saurabh Soni for the learned panel lawyer for state. Shri I am for the intervener, sir. Lord, I am opposing his intervention application. हाँ, लेकिन अभी कुछ अलाउ कहाँ कर रहा है अभी तो। योगेश सिंह बघेल for intervener. Shri Soni Press for and is granted 4 weeks time to file reply. 2 weeks time. In the अभी आपने 4 बोला था। I apologize. 2 में आएगा नहीं आपका। 4 weeks time to file reply. In the meanwhile, learned counsel for the petitioner may file reply to the intervention application list after 4 weeks. I have to continue. I have to continue. Number 35, other sign. Should the order dated 27th of January may seen? They were directed to produce the records. Till now, they have not produced. Who has to produce it? The state. The appellate authority and chief conservator forest, Central Forest Development. अब हमें नहीं मालूम सेंट्रल का क्या मतलब होता है। ये शायद कुछ नाम शायद गलत हो गया था, इसलिए रिकॉर्ड नहीं आता है। क्या कर सकते हैं हम उसके लिए? Who is responsible? इसमें से सेंट्रल की जो सेंट्रल कैसे हुआ सर? ये सेंट्रल सेंट्रल मतलब मध्य होगा, सेंट्रल का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होता है हमेशा। अब थोड़ा सा क्या है, आप लोग इंग्लिश मीडियम के हैं? मैं सर इसका रिकॉर्ड निकाल रहा हूं। लिखिएगा। There is non-compliance of the order dated 27/1/2023. Counsel for the state has yet not made compliance. By way of last indulgence, 4 weeks time is granted to make compliance. List after 4 weeks. The fixed date, Your Lordship, sir. Fixed date. Week commencing. आएगा। Week commencing 4 सितंबर 2023. Obliged. Number 36.
Your Lordship, in this case, if I may make a submission at the outset for disposal of the case, my lords, I have some instructions. My lords, in this, इनको भी सुन ले My lords, arguing counsel, Mr. Kaustubh Singh's grandmother passed away yesterday. So therefore, I'm praying that it may be taken after 2 weeks. आपका शुभ नाम बताइए हाँ ठीक है Your Lordship, my humble prayer is that. when there is a personal problem My lords, at Janet, I'm only praying. After 2 days, he may seek instruction on what I'm submitting. That also. there is a death in his family, case will come up only after 2 weeks. क्या नाम है आपका? Rajvardhan Singh. Shri Rajvardhan Singh submits that arguing counsel Shri Kaustubh Singh has lost his grandmother yesterday. He is not available in court for 2 weeks. On his request, case is adjourned for 2 weeks. Rest after 2 weeks. Lordship, I am for respondent number 6, Your Lordship. लिख के दे दीजिए, नाम आ जाएगा. Rishi Sharma. My lord, I pray a big time, my lord, to argue the matter. Shri Dharmendra Patel, learned counsel for the petitioner, prays for time to argue this matter. क्या हो गया? क्या मैटर है ये? My lord, petitioner is aggrieved by the demarcation. My lord, petitioner is a adjacent landholder. My lord, private respondent moved an application. उसको आप स्टे लेके बैठे हैं, बहस क्यों? My lord, stay has already been vacated. My lord, on the last. Vacate हो गया. My lord, without. It is widely submitted that stay is already vacated. 12/5/2020. There is no urgency in the matter. Petition is admitted for final hearing. List for final hearing in Part B of the cause list as per its turn and seniority. My lord, my prayer is only, my lord, can you take a mercy, my lord? नहीं. The offence was registered against the applicant under section 3(7) of the Essential Commodities Act and 420 and 285 of IPC law. In the same offence, Lordship, the vehicle of the applicant has been seized, Lordship. Thereafter, we have filed an application for Supurdigi Nama. That application has been rejected. Then we have filed MC 482 Lordship, in which Lordship the order has been passed as per Annexure P1, Lordship. Page number 17 Lordship. Yes. By which it was directed to the applicant to deposit the FDR Lordship. Then the vehicle would should be released Lordship. But in pursuance of this order Lordship, we have deposited the FDR Lordship. Ultimately, my vehicle has been seized Lordship. Ultimately, vehicle has been released Lordship. Released. Yes. But thereafter, Lordship, the case which is pending before the Commissioner Lordship for consification Lordship, that order has been passed on 29/1/2019 Lordship. 29/1/2019. Yes, Lordship. कहाँ है वो order? ये as per Annexure P2 Lordship. P2. By which Lordship, the all material which has been seized by the applicant Lordship, that has been confiscated Lordship. Against this order Lordship, we have filed an appeal Lordship. In appeal Lordship, the order of the collector has been satisfied. After this order Lordship, we have moved an application for releasing the FDR Lordship. That application has been rejected on this ground Lordship. Kindly see page number 41 Lordship, last para. प्रकरण इस न्यायालय में उपलब्ध न होने के कारण तथा वरिष्ठ न्यायालय में विचाराधीन होने से आवेदक के आवेदन में कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नहीं है. But when Lordship, the matter has been closed Lordship, then we have. Because of the revision is pending, my lord. Revision is pending before whom? No, my lord. My lord, Revision is pending before which court? in a high court, my lord. कहाँ है? कौन से नंबर की Yeah, my रिवीजन? lord, 38.1, my lord. हाँ, क्या उसको अभी सुन के डिसाइड कर देते हैं, उसके बाद इसको ले लेते हैं. बताइए क्या रिवीजन है आपकी? बहस करिए रिवीजन में. My lord. The allegation, my lord, the FIR registered, my lord. जी. May I read the page 8, my lord? जांच पड़ताल में टैंक लॉरी क्रमांक MP20G. कहाँ पढ़ रहे हैं आप? जी, पेज 8 जांच पड़ताल में. यस. जांच पड़ताल में टैंक लॉरी क्रमांक MP20G 200 के चारों कंपार्टमेंट में नीला केरोसिन पाया गया, जिससे टैंक लॉरी के गेट के मापने पर कुल मात्रा 10,000 लीटर प्राप्त हुई. मौका स्थल पर जब्ती पत्रक अनुसार टैंक लॉरी 100 में 10,000 लीटर नीला केरोसिन जब्त कर सुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से डायल 100 पर पुलिस के माधवनगर थाने में भिजवाया गया. Then the ballot FIR registered, my lord. जी. In the page 10, my lord. Page 10, yes. Page 10, my lord. जी.
इस ऑर्डर को पढ़ने से आज क्या मतलब है? उसके बाद तो नो माय लॉर्ड, इनके पास से सीज हुआ माय लॉर्ड, वो सब ठीक इनके है। पास डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल नहीं थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या ऑर्डर है वो पढ़ें तो जरा। मालूम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या ऑर्डर है? मालूम ये जो अपर सत्र न्यायाधीश जो है मालूम इन्होंने क्या लिखा है? पैरा 20 मालूम इस आधार पे खारिज करी है मालूम, हाँ, किस इस आधार आधार पे पे? allow- इसी प्रकरण पर पैरा 20 मालूम, हाँ पेज 25 मालूम, हाँ इसी प्रकरण पर अपराधी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिया गया अन्य आधार तय की आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6A1 में द्वितीय परंतु के अनुसार वस्तु का अधिग्रहण आदेश दिए जाने के पूर्व संबंधित व्यक्ति को अधिग्रहण की तारीख को उसके बाजार मूल्य से अधिक कीमत न हो, कीमत का संदाय करने के प्रावधान है, लेकिन कलेक्टर न्यायालय ने विधि के इस प्रावधान का उल्लंघन करते हुए चुनौतीग्रस्त आदेश दिया गया। अपराधी को कीमत की राशि अदा करने का अवसर नहीं दिया गया। ओनली दिस ग्राउंड मानो कि इनको अवसर नहीं दिया गया, जितनी जो कैरोसिन सीज हुआ था उसकी राशि अदा करने का इनको अवसर नहीं दिया। पढ़े 6A में क्या प्रावधान है? तो मालूम 6A में क्या प्रावधान है? पढ़िए। 6A है 6 Confiscation of the food grains, edible oil seeds and edible oils मानो जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में मानो इनके पास जो कैरोसिन पाया गया मानो वो आवश्यक वस्तु मानो नया रीड मानो। एक सेकंड। जी, इनका ये कहना है कि गाड़ी के ल्यू में आपने जो है उसका पैसा जमा करने का पैसा ऑप्शन नहीं दिया। ऑप्शन नहीं दिया। हाँ। बट माय लॉर्ड ये तो गाड़ी के संबंध में है ना, केरोसिन के संबंध में तो है नहीं। केरोसिन के संबंध में तो FIR कंटिन्यू करेगी, सिर्फ गाड़ी के रिलीज के संबंध में है। बट माय लॉर्ड पैरा इन द ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर माय लॉर्ड, कलेक्टर साहब ने क्या कह दिया आपके? पैरा 12 में माय लॉर्ड इनके ऊपर पुराने भी क्राइम है माय लॉर्ड, इसी सेम क्राइम। बताइएगा ना कि कहाँ प्रावधान है कि पुराने क्राइम का संज्ञान लेके गाड़ी कॉन्फिस्केट की जा सकती है? ऐसा प्रोविजन है दैट फॉर द अर्लियर क्राइम्स व्हीकल विल बी सीज्ड विदाउट रिसोर्टिंग टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस सेकंड प्रोविजो बिलो सेक्शन 6A ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ऐसा पढ़ दीजिए, बता दीजिए कोई कानून। आप इतनी बड़ी स्टेट हैं या डिवीजन लेकर आए, अरे जजमेंट बताइए ना। I have noted your submission. Now please give me the judgment. It says that looking to the past conduct, you are not required to resort to the second proviso below section 6A. इतना जजमेंट बताइए। उनके ऊपर 3 से 5 क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले भी हैं। होंगे। ये क्या लिखा है इसमें? You are required to give him an option to deposit the market value of the vehicle in lieu of confiscation. And बस मुझे इतना बता दीजिए। सिर्फ यही ग्राउंड है मालूम कि इनको एक अवसर नहीं दिया है। हाँ, तो ये ग्राउंड को कंप्लाइंस करने का नहीं हाँ, दिया। तो आप ये बताइए ना कि इस अफसर को न देने के लिए पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जा सकता है। इतना सा तो बिंदु आपसे पूछ तो रहे बार बार। नहीं, सॉरी नहीं। This criminal revision is filed by the state under section 397 read with 401 of CRPC.
being aggrieved of the order dated, judgment dated 28/2/2020, passed by learned First Additional Session Judge Katni in CRA 14/2019, reversing the order of the collector Katni passed in case number 379/B-121/17-18 on 29/1/2019, deciding to confiscate tanker bearing, ये तीन टैंकर्स हैं क्या? टैंकर्स bearing registration number MP17C 5298, MP20G 0466 and MP22G 5252 on the ground that collector had not taken cognizance of the proviso, second proviso below section 6 capital A of the Essential Commodities Act 1955, which provides, bus 55, next para. Shri Vivek Lakhera, learned government advocate appearing for the state, submits that there is a criminal history of 4-5 cases against the petitioner, against the respondent, full stop. And therefore, there was no need to provide an opportunity in terms of second proviso below section 6A of the Essential Commodities Act 1955. Next para. After hearing learned counsel for the part, Shri Y.M. Tiwari submits that the provision contained in second proviso below section 6A is mandatory because the word which is used is shall, and for violation of a mandatory provision, order of the collector has been rightly set aside. Next para. At this stage, when Shri Vivek Lakhera, learned government advocate, is requested to point out from some case law or judgment of High Court or Supreme Court that in case of a criminal history of an applicant, collector is authorized to give a go-by to the provisions contained in second proviso below section 6A, he is unable to produce any material on record. Full stop. Next para. After hearing, full stop. Second proviso below section 6A reads as under, within inverted commas, provided further that in case of any animal, vehicle, vessel or other conveyance used for the carriage of goods or passengers for hire, the owner of such animal, vehicle, vessel or other conveyance shall be given an option to pay in lieu of its confiscation, a fine not exceeding the market price at the date of the seizure of the essential commodity sought to be carried by such animal, vehicle, vessel or other conveyance. Full stop, inverted commas close. Thus, next para. Thus, it is evident that the word shall is used, which clearly makes the proviso mandatory. Full stop. Collector Katni was oblivious of this provision. He has admittedly not followed the mandatory provision. Full stop. Therefore, for violation of following the mandatory provision contained in second proviso below section 6 capital A of the Essential Commodities Act 1955, order of the learned First Additional Session Judge Katni cannot be interfered with, as there is no illegality or irregularity in exercise of the authority by the said court while passing the impugned judgment. Full stop. Revision fails and is dismissed. Next. Record of the court below be sent back. WP 12137 of 22.
petitioner is aggrieved of the communication made by Collector Khatni on 20/11/2021 to refund the security deposit made by the petitioner in terms which was deposited by the petitioner in compliance of the order dated 27/8/2018 passed by a coordinate bench in MCRC number 28884/2018. Full stop. It is submitted that once the order has been passed by the first additional session judge Khatni on 28/2/2020 holding the proceedings of confiscation to be illegal and thus resulting in release of the confiscated vehicles in favor of the petitioner, then petitioner is entitled to refund of the security as has been furnished by him in compliance of the orders of the High Court. Full stop. Shri Vivek Lakhera submits that order has been passed because criminal revision filed against the order of the first additional session judge is pending in the High Court. Full stop. This court has already dismissed the CRR 1901 of 2020 filed by the state government. Therefore, there is no hindrance in release of the amount deposited by the petitioner with the collector. Collector Khatni is directed to release aforesaid amount within a period of 7 days from the date of receipt of certified copy of the order. Above terms petition is allowed and disposed of. Number 39. इसमें और भी लिखिएगा. सुनील लखेरा जी. Full stop. Collector, the order of the collector is unauthorized and illegal. There was no stay in the criminal revision filed by the state, staying the orders of the learned first additional session judge. Therefore, merely pendency of the criminal revision was not a sufficient cause to not to release the जी. उस ऑर्डर में ये लिखा है कि वो रिकॉर्ड ना होने के कारण वो नहीं ये सब बेकार. रिकॉर्ड ही could have called for the record. हाई कोर्ट आ गया. हाँ ठीक है, वो भी लिखा देते हैं. आपकी बात वो भी लिखा देते हैं. क्या लिखा? क्रिमिनल रिवीजन वॉज, लीजिएगा क्रिमिनल रिवीजन दिखाइएगा. उसमें रिकॉर्ड कॉल किया गया था क्या? रिकॉर्ड इज अवेलेबल. दिखाइएगा. आदेश में लिखा है. नहीं आपके आदेश में नहीं, रिवीजन दिखाइएगा. रिवीजन में सर. रिवीजन में रिकॉर्ड कॉल हुए बगैर कैसे आ जाएगा? रिकॉर्डिंग देख लेते हैं ना. ऑल दी रिकॉर्ड्स. अच्छा क्या लिखा? इसमें लिखा है सर. Release the amount as there was no stay in the criminal revision. Full stop. Collector could have requisitioned the record for the aforesaid purpose by moving an appropriate application before the High Court. But instead of filing an appropriate application before the High Court, Collector passed impugned order. My lords में kindly see page number 41 of purpose. कहाँ है वो दूसरी WP इनकी वाली? इसमें सर पेज नंबर 41 में इसमें लिखा है. हाँ. आवेदन का अवलोकन किया गया. जिला अभिलेखागार माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी के द्वारा तथा लिखा है ना इसमें. यही तो पूछ रहे हैं. Therefore, the reason which is given by the collector is inappropriate. Merely pendency of revision did not authorize the collector to not to follow the orders of the learned first additional session judge. Therefore, such cryptic order cannot be given a seal of approval, especially when the orders of the collector were already set aside by the competent appellate authority. Number 39. In this case, I pledge my lord only 7 days time to file rejoinder, my lord. कब रिटर्न कब फाइल हुआ था? रिटर्न तो साहब इनका फाइल हुआ है नवंबर में. फिर सब 3-4 फाइलें थी. मैं कंफ्यूज हो गया. बस थोड़ा एक छोटा सा बस कंट्रोवर्ट करना है. मेरा केस ये है कि बता दीजिए कि they have not issued. My case is, my lord, no so cause has been served to the petitioner. क्या है क्या? पिटीशन क्या है? Debarment of the participation of the petitioner. कितने दिन के लिए? 2 साल के लिए.
Place for time to file rejoinder. 7 days time is granted to file rejoinder. List immediately after 7 days. Your Lordship, we've also moved an IE for deleting respondent number 1 as a party, Your Lordship. No. Your Lordship, because the impugned order is passed by respondent number 2, and my lord, respondent number 1 is represented through Panchayat and Rural Development Ministry, Your Lordship. Lord, who has no role to play, my lord, the impugned order is passed by respondent number. देखेंगे क्या फर्क पड़ता है. I'm on it. List on. Fixed date दीजिएगा. 7 अगस्त 2023 top of the list. I'm on it. Top of the list हटा दीजिए. Top of the list हटा दीजिए. Sorry. Sir, in this case, the reply of the state is awaited, sir. देखिएगा. श्री दीपक श्री Sachin Yadav, sir. Sachin Singh Yadav for the petitioner. Shri Piyush Jain, learned government advocate for the state. Reply of the state is still awaited. Notices were issued to the state on 8/7/2022. Over G. Must 3 weeks more. Over a year's time has lapsed. State has not filed reply. Let reply be filed within 7 days. Failing which 7 days. List on 8 अगस्त 2023. Number 51 Kumar Bajpayee, state petition lordship for the respondent. Petition is not maintained on lordship because there is a alternative remedy. Against the section 5 application was rejected by the lordship. They are not available the remedy of revision lordship. रिप्लाई के लिए पिछली बार टाइम लिया था. अरे अभी तो बता दीजिए ना, आपके पास ऑल्टरनेट रेमेडी है तो वहाँ चले जाइए. यहाँ क्यों टाइम जाया कर रहे हैं? भाई लौटे ये रिप्लाई नहीं देना चाह रहे तो फाइनल कर दे. हैं? Our reply is there. ठीक है, लेकिन उसमें तो कल कोई बता रहा था कि वो सेक्शन 5 की एप्लीकेशन के खिलाफ अपील लगती नहीं है. सर रिवीजन अच्छा, सेक्शन 50 का रिवीजन लगेगा. पढ़िएगा पढ़ाइएगा. 46 में है सर. MPLRC दीजिएगा. $46 46 में सर वो अपील बाहर की है. हाँ ठीक है. रिवीजन लग जाएगा सर. किसमें? 50 में, सेक्शन 50 में. Subject to the provisions of subsection 2, 3, 4 and 5, the board may at any time, the commissioner और C में सर है the collector or the district survey officer any time on his own motion or an application of any party call for the record any case which has been decided or proceeding in which an order has been passed under the court by the revenue officer subordinate to him. मिलॉर्ड एक टाइम दे दे, हम इसको देख लेंगे. यदि ये रिप्लाई नहीं दे रहे तो फाइनल आर्गुमेंट. जी ठीक है. श्री अमित बाजपेयी. अमित बाजपेयी. बाजपेयी फॉर द पिटिशनर. Shri Piyush Jain, learned government advocate for state. Shri Pushpendra Dubey for the respondent. Shri Pushpendra Dubey submits that he does not wish to file reply. Petitioner has an alternate remedy under section 50 of the Land Revenue Code to file revision against the order of the SDO refusing to condone delay. Full stop. Shri Bajpayee prays for time to examine this aspect. On his request, list this case next week. भाई Number 42 Kumar Pandey, case. That's the issue which is raised in this case, my lord. That issue already decided by this court. In this case, that will then be executed in favor of the petitioner. In the year of 2019, thereafter petitioner has given an application before the Tehsildar. After recording the evidence, the Tehsildar has passed an order and passed an order to meet with the name of the petitioner. Thereafter Tehsildar order ठीक है, has समझ गए. ये रेवेन्यू कोर्ट में कैसे बिल की वैलिडिटी चैलेंज होगी? सिविल सूट लगाना पड़ेगा आपको, या हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं? तो पिटीशन नहीं सर, इनका ही है एप्लीकेशन. अरे इनकी विल है, इनकी विल को तहसीलदार ने अमान्य कर दिया. मान्य किया, मान्य किया. एसडीओ और कमिश्नर से उसको सेट असाइड कर दिया. ऑर्डर तो ठीक तो किया, ठीक तो ऑर्डर है. तो हमारा कहना है लॉर्डशिप
that the revenue, if the Tahsildar has passed, in such order, Honorable Court has set aside the order and relegated the matter to go before the civil court. वही तो हम भी कह रहे हैं. तो वो मेरा कहना लॉर्ड से set aside the order of SGO and commissioner and we go before the civil court. तहसीलदार का भी ऑर्डर सेटिसाइड हो जाएगा, तीनों ऑर्डर सेटिसाइड हो जाएंगे. देखिएगा, श्री के पांडे fairly submits that all the three orders passed by the Tehsildar, Sub-Divisional Office, Tehsildar Pepariya, District Narmadapuram, Sub-Divisional Officer Revenue, Pepariya, and the Commissioner, Additional Commissioner. Commissioner Narmadapuram will be set aside in as much as in terms of the orders of this court passed in WP 1820/2011 within bracket Akshay Kumar versus Srimati Ramrati Pandey and others decided on 6/4/17. Court competent to decide the validity of will is the court of civil jurisdiction and not the revenue court. Full stop. Therefore, all the three orders are set aside. Petitioner is relegated to avail remedy of filing a civil suit to seek a declaration on the will Lord's merits executed in favor of the petitioner. Within 10 days we will file a suit. Stay order, status quo order. सर वो तो only 10 days if Lord's. ठीक है देखिएगा 10 days में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. देखिएगा, if civil suit is filed within 15 days, then parties shall maintain a status quo for 15 days and thereafter the aspect of interim relief will be subject to the adjudication by the competent civil court on an application under Order 39, Rule 1 and 2. In above terms, petition is disposed of. Second. In item number 3, my lord. हाँ. This is squarely covered by the decision of the Supreme Court, my lord. I just want to cite it, my lord, because क्या आप कहीं पर भी लगा सकते हैं? वो यही तो कह रहा है कि कोने से लगा लीजिए. My lord, that is what has been decided by the Supreme Court, my lord. That the alignment, once it is fixed, my lord, after survey. After proper survey. My lord, को सुनवाई का मौका दिया था क्या? My lord, I forgot to mention IR is there in item number 26, which was adjourned for 2 weeks because of loss of. Item number 3. Item number 36 IR. Sir, item number 36. सर ने बोला ना